Confused? Do you want to know how to choose the right vendor in PEB? We will tell you today. This is Anupam Agrawal from Durga Steel Group. From last 20 years, 30 years we have been dealing in steel, and from last 10 years we are into pre-engineered building. We have started this from scratch, this pre-engineered building business, so we know what all things are important and we have learned over the time. I would like to share those things with you today. So the first one which you should keep in mind is manufacturing unit. जिससे भी आप परचेज करें बस आप ये इंश्योर कीजिए कि उसका खुद का प्रोडक्शन यूनिट है, सो दैट ही कैन कीप अ टैप ऑन क्वालिटी एंड टाइम, बिकॉज आउटसोर्स में इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट. सो ऑलवेज ट्राई टू विजिट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ योर पीईबी वेंडर. इसका एक डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट एक अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे कि जब आप पीईबी प्लांट विजिट करते हैं तो उसमें क्या क्या देखना है. बट इंश्योर दैट the PEB vendor you are choosing should have a manufacturing unit. Second point is the number of projects which they have done and the types of project which they have done. उन्होंने गवर्नमेंट में किया है, कॉर्पोरेट में किया है या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में किया है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ओवरऑल उनका किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस क्वालिटी चेकिंग मैकेनिज्म में किए हैं. क्योंकि अगर एक कॉर्पोरेट में जब भी कोई प्रोजेक्ट करता है तो देयर आर वेरियस क्वालिटी चेक्स. तो अगर उन्होंने कॉर्पोरेट्स में भी काम किए बड़े बड़े, तो फिर उसके हिसाब से आप उनको चूज कर सकते हैं. एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं उतना ज़्यादा एक्सपोजर और उतना ज़्यादा लर्निंग. थर्ड पॉइंट इज यू कैन आस्क फॉर द रेफरेंसेस फ्रॉम योर पीईबी वेंडर कि आपके शहर में उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और उनसे आप फिर बात करके समझ सकते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा. जो पीईबी वेंडर ने कमिट किया था, हैव दे डिलीवर्ड इट और नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली जो डिलीवर हो रहा है वो आपको मैटर करेगा. एंड फीडबैक से बेटर और कुछ हो नहीं सकता अगर आपको अपने शहर में कोई मिल जाए. देन कम्स उनकी जो भी साइट्स विजिट आप कर सकते हैं, जैसे जो भी उनके साइट्स अगर आपके शहर में नहीं है तो दूसरे शहर में नियर बाय में विजिट करने से आपको ये पता चलेगा कि जो भी उन्होंने आपको ऑफर में कोट किया है, आर दे एक्चुअली डिलीवरिंग इट और नॉट. जो कि शीट की क्वालिटी हो, पर्लिन्स की हो, शेड की क्वालिटी हो, जब आप खुद देखेंगे तो आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा. तो साइट विजिट इज अनदर गुड ऑप्शन through which you can choose a right vendor in PEB. Then comes quality checks. हर कंपनी में क्वालिटी चेक मैकेनिज्म का एक डॉक्यूमेंट रहता है कि उनका प्रोडक्शन में क्या क्या चेकिंग की जाती है, फिर डिस्पैचेस में क्या होता है, इंस्टॉलेशन में क्या होता है, एंकर बोल्ट में क्या होता है. ये एक डॉक्यूमेंट आप उनसे मांग सकते हैं. उससे आपको ये समझ में आएगा कि आर दे एक्चुअली फॉलोइंग इट और नॉट, और आर दे डूइंग इट और नॉट. तो दिस डॉक्यूमेंट विल ऑल्सो हेल्प यू इन फ्यूचर जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होगा. तो डू आस्क फॉर अ क्वालिटी चेक डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर पीईबी वेंडर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज जज their professionalism whether they are committed or not, because ultimately it's your time and it's your money which is getting involved. So we want your time to be saved and your money to be utilized in the fastest possible way. So please ensure that the team you are giving is a professional team and committed team, because based on that only you'll get your after sale services also. क्योंकि आपको आज से 10 साल बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो they should stand with you. So do ensure that they are professional enough. I think all these points should be valuable to you when you next time go and choose a right vendor. Thank you so much, and do share and like this video. We look forward to your support. Thank you so much once again. This is Anupam Agrawal signing off. Thank you.